Okay, so let's start. Let's continue our lecture. So, just for the revision, how do we characterize superheated vapor? Definitely, the point of comparison is the saturated vapor because as we move forward from the saturated vapor line, so we have. So, I hope you are clear with the saturated vapor line. मेरी आवाज़ सबको आ रही है और स्क्रीन विजिबल है या नहीं काइंडली कंफर्म कर दें. Yes, sir, आ रही है. Okay. Okay, so this is your saturated vapor line. Okay, the curve. So from this onwards to the right, as we move onwards, so we have the superheated vapor. Okay, so how can we characterize that? We have already learned that in the lecture, in the morning lecture. Okay, so revising it at lower pressures, this means for a given temperature. If the pressure is lower than the saturation pressure, this means you are in the superheated region. Or on the other hand, for a given pressure, for a given saturation pressure, if your temperatures or temperature is higher than the saturation temperature, so this indicates that you are in the superheated region. Okay. Other than that, higher specific volumes, higher internal energies, and higher enthalpies. This means if for the given pressure or temperature, okay, if your specific volume is greater than the Vg, this means the specific volume of the saturated vapor. If this is the case, so this means that you are in the superheated region. Okay, similarly for the internal energies and similar is the case for enthalpies. Okay, so this was for the superheated region, superheated vapor. We will solve an example related to this and hopefully the things will be clear to you. Okay, next, compressed liquid. Okay, so now we are here. Okay, so what is the situation here? Let's discuss it a little bit. It is normally just like superheated vapors tables. There are also compressed liquid or subcooled liquid tables are available, but these are not very common and practical to use. Okay, the reason is that the dependency of properties in the subcooled liquid region on the pressure is very less. What I'm trying to say is that, let's say this is your dome. Okay, something like this. So the pressures are like this. Okay, pressure lines are like this. Okay, so for this subcooled region, there isn't much change in properties as we vary the pressure. Okay, so for the given, let's say for this given temperature, if just give me a minute. Okay, so for this given temperature, okay, if we increase or decrease the pressure, so the properties will not vary that much in this region. Okay, or in other words, the properties in the compressed liquid are solely a function of the saturation temperature. Okay, or
There is another great approximation which is normally valid. We normally take the properties for a given temperature, for any temperature, for the compressed liquid. Okay, so we assume the properties uh, YF. This means the fluid will, the whatever is your, okay, let me explain it through this. Okay, yes. Okay, so I'm trying to say is that for uh, a given temperature, I'm only talking about temperature, not pressure. Okay, this is solely for temperature. Okay, so for a given saturation temperature, for example, if I want you to write the uh, specific volume of water in the subcooled region, okay, so you can simply say it will be equal to Vf, or the, although in other words it is actually saturated liquid, but we can assume the properties of or we can approximate the properties of saturated subcooled liquid to be the properties of saturated liquid. Okay, saturated liquid, I'm not talking about saturated vapor. Okay, so let's see here. Let me just move it. Okay, so compressed liquid tables are not commonly available, right? One reason for the lack of compressed liquid data is the relative independence of compressed liquid properties from pressure. Okay. Variation of properties of compressed liquid with pressure is very, very mild. This means that if we change the pressures in the subcooled regions, the properties do not necessarily change. For example, increasing the pressure of about 100 times often causes the properties to change only less than 1%. Okay, so this means that if we increase this pressure 1,000 times, sorry, 100 times, the volume change in specific volume will highly be like near to 1%. So that is really not a very necessary percentage. Okay. In the absence of compressed liquid data, so this will be normally the case. Okay, आपके आपके पास ऐसा केस होगा कि हमारे पास compressed liquid का डाटा अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है. This you will see in power plant engineering especially, and even in thermodynamics as well, or even in refrigeration as well. So for compressed liquid, we will normally be approximating uh, that the to treat the liquid as a compressed liquid as saturated liquid at the given temperature. Okay, so again इससे related जो numerical problem है जब हम उसको अभी solve करेंगे, so you will get the idea what I'm talking about. Thus we can say for a compressed liquid, okay, or a subcooled liquid, this will be the case. Why? This means the property, either enthalpy, entropy, internal energy, or specific volume, is approximated to be the specific uh, property of the saturated liquid at the given temperature. Okay, so ये आ गया आपके पास. However, there is one problem. Enthalpy is quite sensitive to this variation of pressure. Okay, so enthalpy में changes आ जाती हैं इस approximation की वजह से. So उसके लिए we use this relation. However, normally situations में हम इसको use नहीं करते. The best way is this one. Okay, तो बेस्ट वे हमारे पास अभी भी यही है. इसी को हम assume करेंगे because using this relation may sometime increase the errors. Okay, again I will repeat it when the time comes. आपको उस टाइम ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा. Okay, so again ये मैंने आपको बता दिया. So for a given temperature,
right? So variation of properties. सो दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि नॉर्मली अगर इसे मैं बिल्कुल सादा ज़ुबान में आपको समझाऊँ तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ कहीं होते हैं, ठीक है? लेट्स से यू आर हेयर। तो अब यहाँ की प्रॉपर्टी और ये जो इसी टेम्परेचर पर सैचुरेटेड लिक्विड है उसकी प्रॉपर्टी में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। वी कैन अप्रोक्सीमेट कि वी of this liquid will be approximately equal to V of fluid at that temperature. Okay, saturated liquid. V of saturated liquid at that temperature. Okay. However, in general, compressed liquids are characterized by अब ये सारा कुछ जो है it is opposite to what we have seen for the vapor, uh, superheated vapor. Okay, ये सब कुछ उसके opposite है. So we have high pressures. This means for a given temperature the pressure is high. इसी तरह for given pressure the temperature will be low than the saturation temperature. Okay. इसी तरह same again, lower specific volumes, lower internal energies, lower enthalpies. However, बेटर तरीका यही है जो अभी आपसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है? दैट इज बट अनलाइक superheated vapor, the compressed liquid properties are not much different from the corresponding saturated liquid. Okay, so एक चीज़ जो कि यूज़ होगी इस इंटरपोलेशन के बारे में आपने किसी और कोर्स में पढ़ा है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के किसी कोर्स में? जी एनीवन, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो, कैन एनीबडी, इज एनीबडी ऑनलाइन और नॉट? सर नहीं पढ़ा है। Okay. Yes, interpolation is a very linear interpolation. You will most probably learn it in numerical methods course. Okay, so let me just give you an idea about this. So, in second year mathematics or DAE mathematics, आपने स्लोप के बारे में तो पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में. Okay, so let's assume कि फॉर अ गिवन टेम्परेचर आपसे किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो अभी सुबह के लेक्चर में, मुझे अब पता नहीं है किसने किया था, कि फॉर एग्जांपल 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर वी हैव द वैल्यूज, इसी तरह द नेक्स्ट इज 75. ओके, सो लेट्स अज्यूम कि फॉर द टाइम बीइंग वी आर टेकिंग द स्पेसिफिक वॉल्यूम. ओके, सो 70 पर भी है, 75 पर भी वी नो. फॉर एग्जांपल वी एफ हम कर रहे हैं, तो या वी जी को देखते हैं, तो वी जी एट 70 इज, लेट्स अज्यूम इट इज 0.01, राइट? एंड सिमिलरली वी एफ, सॉरी वी जी एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0. ओके, मैं आपको इसको एक और तरीके से समझाता हूँ, यहाँ आपको नजर नहीं आएगा. जस्ट गिव मी अ मिनट. So let's make a table here. Okay, so x1 हमारे पास, let's call this x1. This x1 is actually, let's assume x are the, okay, ये ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जो आप समझ लें. x means here temperature. नज़र आ रहा है सबको? यस सर। Okay, so x means temperature and y means for the time being specific volume. ओके, तो आपके अलावा और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता है क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर रहे रिस्पॉन्स? मौजूद तो सब ही हैं. जी सैफ, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है या क्या? अच्छा, आप इसके अलावा यहाँ मैसेज भी छोड़ सकते हैं अपना, ठीक है? तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कोई मैसेज हो यहाँ छोड़ दें.
Okay, so let's say 70, and we have one more, let's say 72 एंड 75. सो अब मुझे नहीं पता आप में से किसने ये क्वेश्चन किया था, बट somebody asked me about this. Okay, so let's say we know the value of, normally tables में ऐसे होता है 70 के बाद तकरीबन 5 डिग्री सेंटीग्रेड का जा पाया था 75, और इस पर we will have the value like 0.2. ठीक है, सो अगर आपसे कह दिया जाए कि नहीं, द टेम्परेचर इज नॉट 70, नॉट 75, इट इज 72, and you need to find out this value here. Okay, how can you find this value? What will be your approach? जी, ये चलें 72 नहीं कहते, 71 कहता हूँ उसको मैं. सर What will, फिर 70 इस्तेमाल करेंगे हम। no. सर इंटरपोलेशन मेथड यूज Yes, करेंगे। we will use the linear interpolation method. Okay, so let me just copy it, or let me just write it. So आपने कॉन्सेप्ट स्लोप का तो पढ़ा है ना, इन योर मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं पढ़ा है, बस आपको याद नहीं है. सो देखिए, इन दिस केस वी नो अबाउट दिस पॉइंट. हमें एक पॉइंट पता है, उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है. ठीक है, जैसे अभी के केस में एक्स नॉट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, एंड वाई नॉट इज आई थिंक 0.1, अभी मैंने जो अज्यूम किया 1 2 था या क्या था. ठीक है, सिमिलरली एक्स वन भी हमें पता है. ओके, एक्स वन इज 75 एंड वाई वन इज आई गेस 0.2. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये हमें पता है, एक्स बीच में जो एक्स दैट इज 71, जिस पर हमने फाइंड आउट करना है, और प्रॉपर्टी ये वाई फाइंड आउट करनी है. वी डोंट नो दिस प्रॉपर्टी. सो उसके लिए we use the concept of slope. We assume that the properties have a linear relationship. Okay, उनके दरमियान एक linear relationship है. ठीक है, from here till here. ठीक है, तो लीनियर रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि स्लोप जो है दोनों, अगर हम दिस माइनस दिस करें तो जो स्लोप बनेगी दैट विल बी इक्वल टू दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट. आई होप कि स्लोप का आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है. मैथमेटिक्स में जो स्लोप हम यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप. जी, एनीवन? आई होप दिस इज क्लियर. सो यस सर। इस इस इक्वेशन को फिर हम थोड़ा सा रीराइट करते हैं, एंड वी कैन यूज नाउ नाउ यूज दिस इक्वेशन. इसमें आपके जितने भी राइट हैंड साइड पर वैल्यूज हैं वो सारी नोन है. ओके, सो अगर मैं, आई थिंक देयर इज सम मैसेज. ओके, सो अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ, सो इस स्पेसिफिक एग्जांपल में, ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग द स्क्रीनशॉट ताकि आपको समझा सकूँ. सो इस स्पेसिफिक एग्जांपल की अगर बात करूँ, तो इस फार्मूले में दिस अननोन इज एक्चुअली दिस y, this is your unknown y. Okay, this y not this one. Okay, plus then what will be the x? Anyone? x क्या होगा इसमें? 70 सर। No, 71.
ओके, आप इस तरह याद रखें बिकॉज दिस इज पेयर्ड विद वाई ना, सो एक्स नॉट और वाई नॉट सेम वैल्यूज ये वाली हैं, x1 and y1 these are the values, and x and y are these values. Okay, now x naught will be this 70. Similarly y1 will be 0.2, y naught क्या हो जाएगा आपका 0.12. इसी तरह x1 will be this value 75 minus x naught again ये value होगी. Okay. So इस तरह by putting these values we can find out this y, ये value. Now we will solve this in the upcoming lecture, in the upcoming numerical we will solve it. Okay, and we will see how we can solve it. Okay, so now let's start this example. यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. Okay, so determine the temperature of water at a state of pressure that is 0.5 megapascal, and H enthalpy is also given to you, which is 2890 kilojoule per kg. अब यहाँ से थोड़ा सा हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़े हल्के से डिफिकल्ट होने वाले हैं, ठीक है. सो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, अभी हमें ये नहीं पता कि वाटर की स्टेट क्या है, आइदर इट इज़ अ वेपर लिक्विड मिक्सचर, or it is a saturated liquid or a saturated vapor, or it is in the superheated region, or it is in the compressed liquid region. Okay, so how can we determine that? We know कि हमें enthalpy बता, pressure given है, and we have also been given the enthalpy. So let's first of all let's see, we will go to the saturated water pressure table, क्योंकि हमें टेम्परेचर नहीं गिवन, हमें प्रेशर पता है, ठीक है. सो प्रेशर पर आएंगे आप, 0.5 मेगा पास्कल इज एक्चुअली 500 किलो पास्कल, ठीक है. यहाँ पर अब मेगा पास्कल में आपके पास नहीं होता प्रेशर सेचुरेटेड वाटर्स में, इट इज़ इन किलो पास्कल, तो 0.5 मीन्स 500 मेगा किलो पास्कल. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है. Yes, sir. ओके, सो नाउ इस प्रेशर पे अब फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ इस बात को याद रखें. अब इसमें जब आपके पेपर में आएगा ऐसा कोई क्वेश्चन, जब आपके न्यूमेरिकल आएगा उसमें इन योर असेसमेंट क्विज और असाइनमेंट, तो वहाँ पर ये आपको नहीं बताया जाएगा इधर इट इज़ अ सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर. अगर ऐसी कोई बात गिवन हुई तो वेल एंड गुड, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, बट अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी से इसकी स्टेट का अंदाज़ा लगाना होगा. So now tell me, how can I understand the state of this water? किस तरह हम evaluate कर सकते हैं state को? Point of comparison क्या होगा हमारे पास? वापस आ जाएं. Let's see. देखें, या तो आपके पास जिस क्राइटेरिया हमें एंथैल्पी सिर्फ गिवन हो, एंथैल्पी इज ओनली गिवन टू अस, ठीक है. सुपर हीटेड वेपर के लिए एंथैल्पी का क्राइटेरिया ये, इफ दिस इज द केस फॉर अ गिवन temperature or pressure, if H is greater than Hg, this means you are in the superheated region. Okay, इसके बरक्स अगर हम चलें, for compressed liquid we have this situation. Okay, and if your enthalpy is between this range for this given pressure, if your enthalpy is between these ranges, so this means कि आपका you are in the mixture region, right? Okay,
So first of all, tell me what is the situation right now. अगर इसमें सारे को बिल्कुल समराइज कर दूं तो सिंपल सी बात है, इफ योर enthalpy, this enthalpy for the given pressure or temperature, if your enthalpy is equal to hf, this means you are at what? Saturated liquid. If the enthalpy, ये जो given enthalpy है, it is equal to hg, so this means you are at saturated vapor. Okay, if your enthalpy is between hf and hg, so this means you are in the mixture region. And if your enthalpy is greater than hg for the given pressure or temperature, this means you are in the superheated region. And if your enthalpy, given enthalpy, सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा। जी, स्क्रीन शो नहीं हो रहा आपका। सबको स्क्रीन नहीं शो हो रही? सर हमें शो हो रही है। हमें हो रही है सर। अच्छा, सर अब हो रही है। अच्छा, आप जिसको शो नहीं हो रही वो काइंडली एक बार जाएं, एग्जिट करें और दोबारा ज्वाइन करें. ओके. And if your, okay, so the last one, if your enthalpy is less than hf, this means that you are in subcooled liquid region. ओके, मैं इंशाल्लाह इससे रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर और अपलोड करूंगा जिसमें एक बार इसको आपको रिवाइज कर दूंगा, ठीक है सारा. ओके, सो I will try to upload a separate tutorial lecture kind of thing that will be separate from the regular classes. Okay, so I hope this is clear right now. So this means if your enthalpy is at equal to hf, so this is saturated liquid, then f, if h is equal to hg, saturated vapor. If h is between hf and hg, then you are in the mixture region. If h is greater than hg, this means you are in saturated uh, sorry, this superheated region. Okay, and if h is less than hf, then you are in subcooled region. ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, यस सर। ओके जी. नाउ प्लीज टेल मी, जितनी बात मैंने अभी की है इस एच पर एंड फॉर दिस गिवन प्रेशर, pressure again you should remember 500 kilopascal or 0.5 megapascal are the same things. Okay, so is your water a superheated vapor, superheated region, or in subcooled region, or in the mixture region, और किस region में? देखें, these are your HFs, HFG and HG. So clearly HG is this value. Okay, सर so ये सुपर हीटेड रीजन में yes, because H given is एज 2, ग्रेटर देन जो है। yes, is greater than Hg, right? Hg is 2748 and H given is 2890 for the same pressure. So this means you are in the superheated region. Superheated region. Okay. I hope यहाँ तक it is clear. Now, because this is the case और हमने find out क्या करना है, temperature of water. So if it is in the superheated region, इसका मतलब क्या है? Physically क्या मतलब है? कि all of your water
is converted into vapor, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद बिकॉज सुपर हीटेड रीजन में वी हैव गॉन टू द सुपर हीटेड रीजन, so this means कि you are for this pressure now your temperature is rising, right? So we cannot say कि इस केस में your uh, temperature will be this, no, because this is the saturation temperature. ये तो तब होता है कि either if you're uh, either you were at these two points or somewhere between. अब ऐसा नहीं है, अब आपकी वेपर को आपने हीट सप्लाई की है, उसने फेस चेंज किया है, सैचुरेटेड वेपर बनने के बाद वो क्योंकि सुपर हीटेड रीजन में चला गया, तो अब इसका टेम्परेचर विल बी हायर देन दिस टेम्परेचर, ओके, एंड टू फाइंड आउट दैट टेम्परेचर वी कैन नॉट यूज दिस सैचुरेटेड वाटर टेबल, नाउ वी विल हैव टू मूव टू a new table which is the superheated table, ओके। अच्छा, सुपर हीटेड टेबल इतना कुछ नहीं है, प्लीज़ एक इस बात को समझ लें। मैं आपको ज़रा इन टेबल्स की असली हालत दिखा देता हूँ। इफ मैंने सुबह भी दिखाई थी आपको। सो कंप्रेस लिक्विड वाटर, सो इन रियलिटी दिस इज द केस, ओके। सैचुरेटेड वाटर का टेबल ऐसे होगा जी, स्टीम टेबल पूरा है। सो मैं तो वो स्क्रीनशॉट्स की वजह से ना, इतनी जगह नहीं है मेरे पास स्लाइड्स में तो आपको समझाने के लिए, अदरवाइज दिस इज द टेबल, ऐसे टेबल आपके पास होगा, ओके। सो सुपर हीटेड वाटर अब किस पर था, वी आर लुकिंग फॉर 0.5 megapascal, not 0.05. So this is 0.05 megapascal. No, we are looking for 0.5 megapascal. वो ये है. Okay. So now we will look into this temperature, this pressure. Okay. अब आप यहाँ पर देखें कि you can have जी, मोहम्मद हारिस पूछ रहे हैं सर ये टेबल्स पेपर में भी दिए होंगे। हारिस, आइदर आई विल शेयर द टेबल्स विद यू और मैं आपसे कह दूंगा कि ये सारे टेबल्स आपने प्रिंट करके लाने हैं, अदरवाइज आई विल गिव इनटू द पेपर, ओके। दोनों में से कोई एक काम करूंगा, ओके। सो ओके, सो हेयर जो मैं आपसे बात कर रहा था प्रेशर इंडिपेंडेंस की, ये बात मैंने आपके साथ शेयर की थी, जो हमारा लेक्चर था पहले वाला, ठीक है, सुबह। सो दिस मीन्स एक ही प्रेशर पर इन सुपर हीटेड रीजन यू कैन हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स, राइट। सो आप देख सकते हैं, सो ऑल ऑफ दीज टेम्परेचर्स, इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दीज टेम्परेचर्स, सॉरी, all of these temperatures, why don't, okay, anyways इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज टेम्परेचर्स और फॉर दिस टेबल, ओके, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सिर्फ एक टेम्परेचर के लिए एक प्रेशर था ना, ये एक प्रेशर के लिए एक टेम्परेचर था मिक्सचर रीजन में, ठीक है। बट फॉर दिस सुपर हीटेड रीजन we have for the one uh, for one pressure we have a lot of temperatures। अब ये पूरी नीचे एक लाइन है जो भी मैंने आपको शो करवाई, ये मैंने सिर्फ उसको कट किया बीच में से, ओके। सो however all of these are not the saturation temperatures, प्लीज इस बात को समझिएगा, ओके। saturation temperature is still this one, यानी कि 0.5 मेगा पास्कल के लिए अगेन सैचुरेशन टेम्परेचर इज फिक्स, वो आप यहाँ भी देख सकते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है 500 किलो पास्कल के लिए ये सैचुरेशन टेम्परेचर है, सेम हेयर एज वेल। ये जो ब्रैकेट में गिवन है ना, दिस इज योर सैचुरेशन प्रेशर और टेम्परेचर, सॉरी, ओके। सो इससे ऊपर दिस मीन्स एट दिस पॉइंट, ये जो एस ए टी डॉट लिखा हुआ है, दिस मीन्स फॉर दिस प्रेशर एंड एट दिस पॉइंट
योर वेपर इज एक्चुअली सेचुरेटेड वेपर। इससे आगे फिर सुपर हीटेड रीजन आ जाता है हमारा। ओके। अच्छा जी, अब कहानी ये है कि आपने फाइंड आउट करना है टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है। सो वी नो द एंथैल्पी, ऐसे ही वी नो दिस एंथैल्पी। एंथैल्पी कितनी है? 2890 किलो जॉल पर केजी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप एंथैल्पी का टेबल देखें तो दिस इज योर एंथैल्पी। अब ज़रा आप ये लोकेट करें, हम अब यहाँ पर लीनियर इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे। ठीक है। अब आप ज़रा ये लोकेट करें कि ये 2890 कौन सी दो एंथैल्पी की वैल्यूज़ के अंदर ये सैंडविच होती है। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो 28, ये 2855.8 है। ओके। एंड दिस इज 2961। सो ये 2890 इन दोनों के दरमियान में होगी ना, ऐसे ही है ना? 2855 यस से सर। ज़्यादा है और यस सर। 2961 से कम है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है आपका ना इस वक्त टेम्परेचर, वो भी इन दो टेम्परेचर जो इसके कोरिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है और जो इस वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है, ये 250, इन दोनों के दरमियान होगा। ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई? अब हमने वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कि वो यस सर। टेम्परेचर इतना हमें पता है कि वो 200 से ज़्यादा है और 250 से कम है। ठीक है। अब उसके लिए हम इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सो ऑल दो ये सामने लिखा हुआ है बट ये आया कैसे, लेट्स सी। सो मैं अगेन इस ग्राफिंग कैलकुलेटर पे जाता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए। ओके, अब इस वक्त हमारा नॉन वैल्यूज़ जो हैं वो एक्स होती हैं हमेशा। ठीक है। तो नॉन वैल्यूज़ कौन सी हैं अभी फ़िलहाल? एंथैल्पी। ठीक है। तो इस वक्त मैं आपको बस समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, या ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको एक्स को हम एंथैल्पी ले लेते हैं। सॉरी। ओके, आपको आइडिया हो गया एक्स एंथैल्पी है। ठीक है। सो पहले हम ऊपर वाली वैल्यू ये रखेंगे 2855.8। 2855.8। ओके। इसके बाद जिस पर हमने फाइंड आउट करना है टेम्परेचर, वो क्या है? दैट इज 2890। राइट। यस। और उससे अगली वैल्यू क्या है? 2961। 2961। ओके। और ये क्या हो जाएगा? आपका 200 है और ये 250 है। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि किस टेम्परेचर पे आपकी जो वैल्यू है वो ये होगी 2890। तो इसके लिए लेट्स इंटरपोलेट। ओके, लेट्स इंटरपोलेट इट एंड लेट्स सी कि हमारे पास जो आंसर आता है या नहीं। ओके। सो इसके लिए क्या करेंगे? पहले तो मैं आपके सामने वो लिख रहा हूँ फार्मूला, y1 या y इज इक्वल टू y नॉट प्लस x माइनस x नॉट, ओके, इनटू y वन माइनस एक्स वन। अच्छा, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ लीजिएगा। नॉर्मली इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको फार्मूला गिवन करूँगा। ठीक है, बट समझ लें कि हाउ कैन वी यूज़ इट। ओके, सॉरी, दिस इज वाई वन माइनस वाई नॉट एंड एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ओके। सो जस्ट कंफर्म यहाँ से कर लेते हैं ये। अच्छा, अब ज़रा मुझे बताएं कि ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं? वाई नॉट क्या है? 200 सर। यस। 285।
वाई नॉट इज दिस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक और कॉलम बना दूँ, सब, दिस इज जी कर देता हूँ, ठीक। तो दिस इज योर ज़ीरो, ये जो हम जिसके साथ नहीं लिख रहे, और ये जो वन है, ठीक है। सो वाई नॉट आपका क्या हो जाएगा? वाई नॉट विल बी दिस 200, ठीक है। इसी तरह और वाई नॉट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा, एक्स क्या हो जाएगा? 2890। 2890। यस, ओके। बाकी कहीं पर भी नहीं एक्स हमारा। एक्स नॉट क्या हो जाएगा? 2855.8। एक्स नॉट 5.8। ओके, सो ये आ गया। वाई वन क्या हो जाएगा आपका? 250। एक्स वन आपका क्या हो जाएगा? 2961। एंड एक्स नॉट आपका क्या, सॉरी, दिस विल बी वाई नॉट, जहाँ वाई नॉट आता था, ठीक है। यहाँ मैंने गलती से, दिस इज एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ओके, ठीक है। एक्स वन ये आपका, तो एक्स नॉट 2855.8। ओके, सो अब देख लें, आपका आंसर आ गया 26216.25 या 216.3 डिग्रीज सेंटीग्रेड। Okay, so this means this is the superheated vapor, and the temperature is this one. Okay, we will stop here, ठीक है। अब मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। एक लेक्चर सुबह का अपलोड हो चुका है और अभी दूसरा अपलोड हो जाएगा। आपने इसको गो थ्रू करना है, ठीक है। बार बार गो थ्रू करना है, और एटलीस्ट हाउ कैन वी यूज़ दिस इंटरपोलेशन, इसको एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास ये सारे टेबल्स मौजूद हैं ना सुपर हीटेड में, इसमें कोई सी भी दो तीन वैल्यूज़ उठाएं, और उसमें जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, अभी इस केस में वी हैव फाउंड द एंथैल्पी। इसी तरह आप एंथैल्पी के थ्रू ये किया, ठीक है। आप इसी तरह कोई और वैल्यू को चूज़ करें, फॉर एग्जांपल यू। अब इसी सेम प्रोसीजर से, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर फाइंड आउट किया, अब आप वी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एंड यू की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये आपको ओके सर। करवानी होगी। ये बल्कि मैं असाइनमेंट आपको दूंगा इस किस्म की, आज ही अपलोड कर दूंगा फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, सो योर असाइनमेंट वन विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो दैट्स इट। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ, एंड ओके, फर्स्ट लेट मी स्टॉप दिस।